So how to calculate the length of a vector if the column vector is given, like here the column vector is in first point, I have written column vector AB is equal to XY. If the column vector of a vector is given, then you can calculate its length, mean magnitude as well. How to represent if a magnitude, mean this is a symbol for magnitude, modular sign, mod. This is a symbol for the length of a vector, magnitude of a vector. And how to calculate it is equal to under root x square plus y square. Basically, the length of a vector by using this formula, square root x square plus y square, is not a new thing for you. ये actually Pythagoras theorem ही है. अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे this is the A point. Suppose first you are moving x units towards right, say this is x units towards right, and then you are moving y units upward, say this is y unit, and here is a point B. If you want to calculate this length AB, how will you calculate? It's simply a Pythagoras theorem. अगर आप AB की length calculate करें, that is the hypotenuse. So you will simply calculate hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So perpendicular square plus base square mean x square plus y square. So hypotenuse is basically AB square, or if you take the square root, it will become x square plus y square. So ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ए बी, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है. सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई. डिस्टेंस फॉर्मूला भी बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला हुआ है. या जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया वो भी पाइथागोरस थ्योरम ही है बेसिकली. सो दिस इज, यू कैन से आइदर डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम. If we take an example like a vector AB is given 3 minus 7, and you want to calculate the length from A to B, or length of the vector AB. So how will you calculate? Simply the length of vector AB is under root x square plus y square, or under root x square. X square means 3 square, y square mean minus 7 square. So it is 9 plus 49, which is square root 58. If this is in paper 1, so that's your final answer, square root 58. Or अगर paper 2 है तो you can use your calculator and write your answer correct to 3 significant figures. So that is the length of a vector. Okay, next is position vector. What is a position vector? Vector AB जो है, it starts from A and end at B. That's the vector AB. PQ. PQ is a vector which starts from P and end at Q. So the special thing about the position vector, it is a vector which always starts from the origin O. Any vector which starts from origin, mean O, that is called position vector. A vector which starts from O. From origin.
is called position vector. For example, if I write here OA, is that a position vector? Yes, it is starting from O. So this is a position vector and this is a position vector of A. You will write position vector of A. If I write OM, is that a position vector of position vector? Yes, it is a position vector. This is a position vector of M. OP, OP is a position vector of P. So any vector which starts from origin is called position vector. This is O, origin. Okay, if I say there's a point A whose coordinates are 4, 2. So I want to label that point here. See, this is a point OA whose coordinates are 4, 2. If I join O with A, here is a vector OA. Is this a position vector? Yes, it is a position vector. OA, because it is starting from O and ending at a certain point, कहीं पे भी stop कर सकता है, but it is starting from A, O, so it means that's a position vector. So this is a position vector of A. So if I write the column vector for position vector of A, mean OA. So how will you write the column vector? We need to start from origin. See, this is origin. So origin से आपको क्या करना पड़ेगा? You need to move towards right. ओरिजिन से अगर स्टार्ट करें तो राइट कितना मूव करना पड़ेगा? 1 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट, 4 यूनिट राइट. So you have to move 4 unit right and then 1 unit up, 2 unit up. So 4 unit right and 2 unit up. So what is OA? Mean position vector of A. O is 4, 2. Mean 4 unit right, 2 unit up. This is the position vector of A, 4, 2. If I write another vector, another point B, say the point B is, the coordinates of point B -3, 1. If I label the point B -3, 1, so -3, 1 is this is the point B. If I join the point O with B and mark the direction of that vector, now this is a vector which is starting from O. So yes, this is also a position vector. Now, if I ask you to tell me the column vector for the position vector of B, mean OB. So you will start counting from O. Now you have to move left. Kitna left? 1 unit left, 2 unit left, 3 unit left, and 1 unit up. So 3 unit left mean -3 and 1 unit up mean +1. So these examples are telling you something. The coordinates of a point and the position vector of that point are same. Okay,
कोऑर्डिनेट्स भी तो काउंटिंग ओरिजिन से ही होती है और पोजीशन वेक्टर भी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई दे आर सेम, ओनली द राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट. We write coordinates of a like in the form of coordinate 4 2, but when you are writing the position vector, the numeric value is same 4 2, but you have to write in the form of column vector because OA is a vector now. See here, B, the coordinates of B are -3 1. What's the position vector of B? It's also -3 1, but you will write in the form of column vector. So इसका मतलब अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और अगर पोजीशन वेक्टर पता हो तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं. So that is our next point. If the coordinates of A are three, 2 example, 3 minus 2. If the coordinates of A 3 minus 2, then position vector of A. Position vector of A, that is OA, is also 3 minus 2. If you know the coordinates, you can write the position vector, or if you know the position vector, you can tell the coordinates. Both are exactly same, only the writing style is different. हम बेसिकली वेक्टर्स की छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं जिनको हम ऐड अप करके फिर बहुत से क्वेश्चंस करेंगे. तो मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक में जो आ रहे हैं. Okay, next concept related to that position vector, let's see. Okay, here in this example, ये जो अभी हम कर रहे हैं, position vector of A भी मैंने लिखा हुआ है, position vector of B भी लिखा हुआ है. If I ask you to find the vector AB, can you find the vector AB? So if you want to find the vector AB, तो आपको पहले A से B line join करनी पड़ेगी. OB minus AB, ये कहाँ से आ गया? So AB से अगर जाना है तो we need to draw a vector from A to B. This is a vector AB. Okay, we did a graphical method already. अगर आपको याद हो first day जो हमने किया था, if you want to find the column vector for AB, just count कि A से B जाने के लिए do we have to move right or left? Left. कितना move करना पड़ेगा? Left. Count करें. Yes, see, if you want to move from A to B, so A to B, 1 unit left, 2 unit left, 3 unit left, 4 unit left, 5 unit left, 6 unit left, 7 unit left, 7 unit left, and then 1 unit down. So 7 unit left mean -7, or down mean -1. This is the column vector for AB. But ये तो हमें पहले भी आता था, नया क्या हमने पढ़ा यहाँ पे? I want to tell you another method to find the vector AB when OA and OB are given. जरा देखिएगा. Yes, Rafi, you are right. See, this is say O. कोई भी एक जनरल सी केस ले रहा हूं. This is a point A and this is a point B. This is the position vector of A. This is the position vector of B. I want to find an unknown vector. आपको हम ये suppose करते हैं कि OA and OB both are given. OA mean position vector of A and the position of vector of B is given, and you want to find the vector AB. That is the vector we want to find. आप ये समझें जनरल टर्म्स में कि अगर हम A पे we are standing at A and I want to go at B, और A से B के दरमियान कोई पाथ ही नहीं है जो आपको पता ही नहीं है,
but you know the path OA and OB. So if you are standing at A and you want to go at B, so how will you go? Direct path you don't know, but you know the alternate route. So what alternate route will you follow? आप A से B जाने के लिए पहले A से O तक जाएंगे और फिर O से B तक जाएंगे, ऐसे ही करेंगे। देखें जनरली अगर आप कहीं पे खड़े हुए ए पे और ए से बी तक के दरमियान वाला पाथ आपको पता ही ना हो कि कैसा कैसा है वहां पे, या उसके बारे में आइडिया ही ना हो, तो आप क्या करेंगे, ए से जाएंगे ओ तक, ओ से बी तक पहुंच जाएंगे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसको आगे भी देखेंगे। बट इफ यू वांट टू फाइंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए बी इटसेल्फ इज नॉट गिवन, but the other route, via other route, the other two vectors are given, so you can find the vector AB in terms of another vector. Like I can make a path here कि if I want to move from A and want to go at B, so A से पहले मैं O तक आऊंगा ऐसे, that is AO, और फिर O से B तक चले जाएंगे, so finally you reached at B. So the path for AB, the alternate route for AB should be A to O vector and then plus O to B. That is how you will find the vector AB, A to O and O to B. अब समझें इसको थोड़ा सा और। मैंने आपको कहा था कि वेक्टर ए बी फाइंड करने लगे हैं एंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन एंड आई वांट टू मेक अ फैक्ट, आई वांट टू मेक अ फॉर्मूला फॉर वेक्टर ए बी in terms of position vectors of A and B. In terms of position vectors of A and B, how to make that? Are these position vectors A, O and OB? Is this the position vector A, O and OB? OB is a position vector because it is starting from origin. But AO is not a position vector क्योंकि ये तो origin से नहीं start हो रहा, origin पे end हो रहा है, but it is not starting from origin. So this is not a position vector and I want to write AB in terms of its position vector. So how to write AO in terms of OA? क्या मैं लिख सकता हूँ इसको AO से OA कर सकता हूँ? Yes, कर सकते हैं. The second important point was if you are doing so, then you need to change the sign. आप AO को we can write OA, but if you are changing the direction of a vector, you need to put negative sign. So here we have used that and plus OB as it is. Now these two are position vectors. If I rearrange them, I can write OB is OAB is equal to OB minus OA. So this is a vector AB in terms of its position vector B and A. अब जरा थोड़ा सा वेट करें अभी आगे भी। ये जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है जिसमें ये जो एग्जांपल एक मिले जिसमें OA was given 4-2, OB was given -3, OA was given OB, उसमें तो AB भी हमने फाइंड कर लिया है, but let's find AB using that method. Mean AB is equal to OB minus OA. So what is OB? Your OB is -3-1 minus what is OA? It's 4-2. Just use your matrices subtraction. -3 minus 4 is -7. 1 minus 2 is -1. Yes, we got the same vector AB -7 -1. So पहले हमने graphically find किया, but ये मैंने वो केस अब किया है कि अगर हमारे पास ग्राफ की ऑप्शन ना हो, हमारे पास पोजीशन वेक्टर गए हैं, तो we can simply subtract them by using matrices. We can find the vector AB. So this is the new formula. You can say vector AB is equal to OB minus OA.
अगर मैं कहूं इसी तरह, what will be the position, what will the formula for PQ then? It will be, yes Talal Ahsan, what will be the formula for PQ in terms of its position vector then? Ji Talal Ahsan, can you hear me? Yes, sir. What will be the formula for PQ then? I don't know. I don't know. ऐसे मैं जोर लगा रहा हूँ। जी हसन कादिर। Yes, now you can unmute. Yes, sir. So if I have written AB as, yes, Hamza, you are right. I got your answer. AB is given OB minus OA. Similarly, what will be the vector PQ then? Yes, Abdul Rafi, you are not right. You are not right. Sorry, मैं unmute करना भूल गया किधर के. चले मैं किसी और से. Ryan Mir, will it be OQ? Yes. Yes, you are right. Yes, Abdullah Shahid, what will be that? PQ. Sir, OQ minus OP. OQ minus OP. It will be OQ minus OP. So generally we can say position vector of second minus position vector of first. So अगर आपसे पूछा जाए LM, then what would be that? It will be OM minus OL. जी, it's not easy सुबह सुबह उठना और क्लास के लिए बैठना, लेकिन अगर आप सुबह सुबह उठ जाएं तो सिर्फ प्लीज कैमरे के सामने बैठना नहीं है, आप प्लीज समझें ये चीजें, ये बहुत बेसिक चीजें अभी चल रही हैं। जब मुश्किल चीजें आएंगी तो फिर ये हर छोटे छोटे पॉइंट्स जितने भी डिस्कस करूं वो एक ही क्वेश्चन के अंदर सब आएंगे। सो प्लीज स्टे अटेंटिव, सिर्फ कैमरे पे बैठे नहीं, दिखाएं नहीं मुझे कि आप या किसी और को कि आप पढ़ रहे हैं, एक्चुअली प्रूव करें इस चीज को। So that is our next sixth important point, that vector AB is equal to OB minus OA. Position vector of B minus position vector of A. एक कोई और लिख देते हैं, PQ. Vector PQ is equal to OQ minus OP. If someone is writing OP minus OQ, that will be wrong, because that direction is very important when you are dealing with the vectors. उसमें direction opposite आएगी. G, is that clear? Okay, next हम जितना ये किया है अभी तक, थोड़ा सा fourth, fifth and sixth point, इससे related हम कुछ थोड़ी सी examples पहले करते हैं, then we'll move forward. Okay, write an example. The coordinates of a point A is 5 minus 2. The coordinates of a point B is 7, 3. You have to find number 1, the vector. Okay. First one is write position vectors of A and B. Number 2, find vector AB. Number 3, calculate magnitude of AB.
I hope you understand the sign. Magnitude, length. If your coordinates are given, then you can tell the position vector as well. Yes, Hashim Ali. What is the position vector of A? OA. What is that? Sir, position vector of A is 5 and -2, or sir, Yeah, B is only 7 and 3. yes, you are right. It's the same thing, but only the writing style will be in the form of column vector because vector hai ye. And OB will be 7, 3. Good. Now, how to find AB? Mr. Daud Hassan. Sir, we make a graph first, right? A small rough graph. Come on, yaar. Do we need graph Okay, for even that? if okay, sir, without using a graph, I can also do it. Yeah, You without graph. I don't want using that graph. वो तो एक method आपने कर लिया और उसकी जरूरत नहीं है अब. इस time save करें अपना. So what method will you use then? so, sir, x will be since OA is 5, the x from OA is 5, and the x from OB is 7. The difference will be 2 in between them. So the x of AB will be 2, and then we go up from -2 to 3, and that will be 5. So it will be the vector AB will be 2 over 5. Yes, so AB, if you calculate the vector AB, so we know the fact it is equal to the position vector of B minus position vector of A. OB minus OA. We have OB 7, 3 minus, we have OA which is 5 minus 2. So just plug those values in that formula or fact. So 7 minus 5 is 2 and 3 plus 2 is 5. So this is the vector AB. And third was the length. So we know length, formula for length is under root x square plus y square. We already have vector AB, 2, 5. So x square mean 2 square, y square mean 5 square. So it is under root 4 plus 25, square root 29. So that's its length. So magnitude length of a vector is square root 29 to be exact. You can write your answer correct to 3 significant figures as well अगर ये paper 2 है तो. Next example. If you have A as -3, 4, the vector AB is 7 minus 1. Find the coordinates of B. Find the coordinates of point B.
Bakshi is saying the coordinates are 4, 3. Please confirm. Are this? Yes. Okay. So we know the vector AB is equal to OB minus OA, or vector AB हमें given है, which is 7 minus 1. We are looking for the position vector of B. ये position vector of B आएगा तो coordinates भी वही होंगे. And we have the position vector of A. I mean the coordinates of A are minus 3, 4. The position vector of A is also minus 3, 4. So just the matrices. If you want OB minus 3, 4 is being subtracted, just add this on the other side. So 7 minus 1 plus minus 3, 4. So 7 minus 3 is 4, minus 1 plus 4 is 3. This is the position vector of B. But we are looking for the coordinates. The final answer coordinates की form में लिखना है. Mean the coordinates of B are 4, 3. I hope there is no issue. Okay, further addition of vectors कुछ करते हैं जिसे आप path बनाना भी कह सकते हैं. Now if I show you a diagram here, we don't know whether it's, we generally know it's a quadrilateral. This is a point A. These all are straight lines. This is B, C, D. If I tell you vector AB is minus 1, minus 3, the diagram is not to the scale, not as per scale, एक rough सा sketch है. Then vector BC is given 5 minus 2. Vector DC is given minus 4, minus 4. These are the informations we have, and the question is to find the vector, column vector AD. जी vector AD find करना है. We have to find vector AD. AB that is given. What is vector AB? मैंने डायरेक्शन खुद ड्रॉ किया क्योंकि क्वेश्चन में A भी given. It is minus 1, minus C. This is given. What is BC? B to C. This is also given. And what is that? 5 minus 2. And what is DC? DC means this is the direction, D to C. And this is given minus 4, minus 4. Now we want to find AD. अब ये हमने find करना है vector AD. Mean A से D we have to move. A से D जाना है. This one. We have to find this vector. So directly अगर देखें तो vector AD is not given. So what other way will you use to find the vector AD? आपके पास कोई alternate path है? Yes, वो path क्या है? आप A से B जाएं, B से C जाएं और C से D जाएं. ये path है ना आपके पास. So पहले आप path लिखें. Mean if you want to find vector AD, then vector AD is, your start should always be from A और end कहाँ पे होना चाहिए? D पे. So A से जाते हैं हम B पे. अब अगर A से आप B तक पहुंचे तो next vector should start from B. B to C and then C to D.
गिवन क्या है उसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन एक बात देखिए, जो मैंने पाथ बनाया है ए से स्टार्ट, ए से और एंड डी पे, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ए डी. My start should be from A and end should be at D. If I'm starting from A and ending at D, that is my AD vector. लेकिन in between भी important है, देखिएगा प्लीज, जहां पे ये वेक्टर B एंड हो रहा है, नेक्स्ट वेक्टर वहीं से स्टार्ट होना चाहिए. मीन ऐसा नहीं होना कि A से B आप पहुंचे तो नेक्स्ट वेक्टर आपका C से D चला जाए. नो, नेक्स्ट वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम B, यहीं से स्टार्ट होना चाहिए आगे. So if one vector is ending at C, the next should be starting at C. And initial and final points should be this A and D. तो अब ये देखते हैं, हमने पाथ तो बना लिया कि A से D जाने के लिए what we have to do, A to B, B to C, C to D. That is called the addition of vectors. लेकिन क्या AD find करने के लिए do we have the sufficient information? Do we have AB? Yes. What is AB? -1 minus C. Just copy that. -1 minus 3. Do we have vector BC? It's 5 minus 2. Yes, we have that. 5 minus 2. Plus CD. क्या हमारे पास vector CD है? No. We have DC. अगर DC है और CD लिखना चाहते हैं तो माइनस यहाँ पे डाल दें, इधर माइनस डाल दें. एक बात सुनिए, आप लोगों ने अंदर साइन चेंज कर दिए, वो भी ठीक है. मैंने बाहर माइनस लिख दिया, बट इनसाइड आई विल राइट -4. लेकिन अगर आप बाहर प्लस लिखते हैं, अंदर ही साइन चेंज कर दे, +4 कर, दैट इज आल्सो फाइन. समझ आ रही है ना बात? तो मैंने प्लस CD को बेसिकली इधर ही माइनस कर दिया. अगर आप इसको प्लस रखते हैं और अंदर +4 करते, दैट इज आल्सो करेक्ट. नाउ जस्ट द matrices एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करें, आपके पास आंसर आ जाए. तो वेक्टर AD विल बी -1 +5 +4 -3 -2 +4. What's the answer for vector AD? It is 8 -1. So the column vector AD is 8 -1. So यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स की है. तो किसी भी वेक्टर को के लिए अगर पाथ बनाना हो तो ये आप बना सकते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एनी वेक्टर AD, अब ये डिपेंड करता है डायग्राम पे, लेकिन जो डायग्राम मैंने बनाई है उसके मुताबिक इट वाज A to B, B to C प्लस C to D, ऐसे हम लिख सकते हैं. लेकिन अगर उस क्वेश्चन में A से B होता और B से डायरेक्ट कोई D भी होता तो हम इसको AB प्लस BD भी लिख सकते थे. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप AD फाइंड कर रहे हैं तो A से स्टार्ट होना चाहिए और D पे एंड होना चाहिए. जी, today we did length of vector, position vector, a vector which starts from origin, और फिर हमने position AB in terms of position vector और addition vector किए हैं. So I hope you got them. So इंशाल्लाह हम इसको फर्दर कैरी करेंगे आगे. जस्ट क्लास से पहले अभी आपको सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ये रिवाइज करके आना है और कुछ भी अभी नहीं करना. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. जी बख्शी. हम सर हमारा मैथ फिर से होएगा इंग्लिश के बाद? नहीं, मैथ फिर हमारे से होगा इंग्लिश के. सर हमारा टाइम टेबल आपको अपडेटेड टाइम टेबल नहीं मिला? में ये लिखा हुआ है, जो काफी अजीब सी था न्यू टाइम टेबल में कि मैथ इट्स दोबारा है आज? इंग्लिश नहीं है, वो चेंज हो गया. अच्छा सही है, मैं चेक कर लूंगा फिर से. सही है सर, थैंक यू. आपको सैटरडे को कोई अपडेटेड टाइम टेबल मिला है? कल या सैटरडे को मिला है ना? उसमें वो चेंज हो गया होगा. सही, मैं चेक कर लूंगा सर, नो वरीज, थैंक यू. ठीक है, मैं भी एक दफा देख लेता हूँ. नहीं है मैथ इंग्लिश के बाद आपकी पता नहीं आर्ट्स वगैरह है कुछ इस तरह. आप लोग
सातवें क्लास में चले जाइए, मैं बात कर। आप साथ में अस्सलाम वालेकुम। मैम साथ में ढूंढेंगे, साथ में ढूंढने अगर ले। अच्छा आ जाए, मुझे एक प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा आप उधर बैठे होंगे, पहले आसानी होगी आपके लिए, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।